Okay, students. Hello. I hope you are all well. So, in my YouTube channel, you saw the last video about the metallurgy only for the exercise 7B. So now we started about the next exercise 7B, and that was exercise 7A. So exercise 7B, the first question is hydrolytic wash, fourth flotation, and electromagnetic separation. Okay, so what is the hydraulic wash? Hydraulic wash is the difference in the densities of the ore and the gang is the main criterion. Okay, so that is the main principle behind this hydraulic wash. Difference in density of the ore and the gang is the main criterion. That's mean जिसको हिंदी में समझना है वो ऐसे समझ लीजिए, जो डेंसिटी होगा ना ओर का वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा उसका जो इम्प्योरिटीज है उससे, और द इम्प्योरिटीज का वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, और जो ओर है उससे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टीयर्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऐसा ऐसा करके रहता है, ठीक है। इधर से ओड़ आता है और पानी भी आता है, और वो पानी में और इम्प्योरिटी फ्लोट होता है। अगर ओर का वेट ज़्यादा है तो नीचे जाके स्टोर हो जाएगा, ओके, पानी के साथ। अगर ओर का वेट कम है तो ऊपर में स्टोर हो जाएगा, इम्प्योरिटी नीचे चला जाएगा। ऐसा एक सेपरेशन होता है, ठीक है, इधर पे हाइड्रोलिक वाश में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। सो बंगाली गाइस ऑल्सो नो हिंदी। एक्चुअली मुझे लगता है ऐसा, अगर बंगाली में आपको समझना है नीचे कमेंट में बोल दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बंगाली भी बोल देंगे। हम तो ऐसे भी बंगाली है, हिंदी भी उतना अच्छा आता नहीं मुझको, तो फिर भी चलो। नेक्स्ट वन, फोर्थ फ्लोटेशन, द प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंशियल wettability of the ore with oil and the gangue particles by water, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या, एक टैंक लिया जाता है, बहुत बड़ा सा एक टैंक लिया जाता है, और छोटा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऑयल रहता है, ठीक है, उसके साथ रहता है क्या, उसके साथ रहता है वाटर, उसके साथ रहता है इधर पे वाटर, ठीक है। ऑयल और वाटर रहता है, उसके अंदर एक ट्यूब जाता है जिसमें से एयर का बबल निकलता है, ओके। बबल निकलेगा वाटर और ऑयल में तो क्या होगा, झाग होगा, ओके। और इसमें वो इम्प्योरिटी वाला मिनरल का जो मिक्सचर होगा, मिनरल इम्प्योरिटी और ओर का जो मिक्सचर होगा उसको डाला जाता है। इसमें कोई एक एक चीज होगा, इम्प्योरिटी वाटर में सॉल्यूबल होगा तो और ऑयल में चला जाएगा। अगर इम्प्योरिटी ऑयल में चला गया तो और वाटर में सॉल्यूबल होगा। ऐसा वाइस वर्सा कंस्टिट्यूशन होता है। एक एक मेटल के लिए एक एक दूसरा एक टाइप का होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सा मेटल है इसके ऊपर, तो प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा ही है। तो इसको बोलता है फ्लोट फ्लोटेशन। आप लोगों का टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा तरीके से दिया हुआ है, आप देखने से आपको शायद हो जाएगा, ओके। और इसके बाद जो होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। आप मान के चलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वुड बहुत इजी है, मान के चलिए। आप एक बहुत बड़ा एक हेमाटाइट रॉक ले लिए और उसको ओर ले लिए, उसको क्रश कर दिए, उसमें बहुत सारा सैंड का पार्टिकल हो गया, उसके में उसमें दूसरा तरह क्ले हो गया, मड हो गया, ऐसे इम्प्योरिटीज है। तो उसको अभी जब हम क्रश करेंगे, क्रश करने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट से वो जब गुजरेगा, बेल्ट के एक व्हील में मैग्नेट लगा होगा, उसमें सारा ओर जो है वो चिपक जाएगा, ठीक है। और बाकी जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे ट्रे में नीचे एक कलेक्टेड जो प्लेस होता है उसमें चला जाएगा, और जो ओट्स होगा वो दूसरा ट्रे में चला जाएगा। कैसा होता है ये आप आपका टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। मोटा मोटा हिसाब से ऐसा होता है, एक जैसे ऐसा कन्वेयर बेल्ट होता है जो हमारा रेल स्टेशन और जो होता है हमारे एयरपोर्ट्स में होता है, जिसमें बैग सामान वगैरह लगा ले आ जाता है। तो इसमें कहता होता होता है दो ऐसा व्हील होता है, ओके। सो इधर से एक साइड से ओर और मिनरल का मिक्सचर इसमें बेल्ट में गिरता है, ऐसा करके पार्टिकल के आकार में गिरता है, छोटा छोटा पार्टिकल के आकार में क्रश करने के बाद। अभी क्या होता है, बेल्ट में इस साइड में रहता है मैग्नेटिक, इसमें मैग्नेटिक मैग्नेट रहता है इस फील्ड में। अभी होता है क्या, जब और इसके ऊपर से गुजरता है ओनली मिनरल जिसमें और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा वही इस व्हील के साथ चिपक जाएगा, वेस्ट सब साइड में कलेक्ट हो जाएगा, ओके। अभी ये व्हील तो जाता रहेगा,
थोड़ा दूर जाने के बाद मैग्नेटिक का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाएगा और इधर पे दूसरा एक कंटेनर में गिर जाएगा। ऐसे करके सेपरेशन जो होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। आई विश आप लोगों को ये समझ में आ गया। अगर आप लोगों का क्लासेस का वीडियो चाहिए तो मुझे बोलना, मैं क्लासेस का भी वीडियो देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी जो है ये वाला वीडियो ओनली फॉर आपका जो टेक्स्ट रहता है, और टेक्स्ट के पीछे बैक साइड में जो आपका जो एक्सरसाइज रहता है सेलिना का, उसके ऊपर भी डिपेंड, मेनली डिपेंड करके मैंने वीडियो बनाया है। ओके, सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट वन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया। So name the methods by which concentrate ore is converted to metallic oxide. Okay, the first question is name the method by which concentrate ore converted to the metallic oxide. हमको पता है metallic oxide में convert करने के बाद metal को extract करना बहुत easy हो जाता है. The process is roasting and कैल्सिनेशन। ओके, आपको पता है ना इसमें क्या क्या होता है। रोस्टिंग में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको बर्न करना पड़ता है। कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करना करता है। क्यों करना पड़ता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा फिनोमेनन, क्योंकि कैल्सिनेशन में ऑलरेडी ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स रहता है वो उसके अंदर में ही प्रेजेंस रहता है, इसलिए इसमें डालने का, बाहर से डालने का कोई भी जरूरत नहीं है। ओके गाइस, next one, state three objectives achieved during the roasting ores. Okay, जो state होता है roasting ore का वो क्या क्या होता है। So here we see the three states. So it remove moisture from the ore, it expel oxides, it oxides sulfide ores to oxide ore. Okay, sulfide ore to oxide ores. Thus three phenomenon occurred during the आपका जब रोस्टिंग होता चलता है तब ये होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, द possessive involved in concentration processes involved in concentration, refilling of ores, refining of ores, and two metallic oxides which cannot be reduced by carbon monoxide or hydrogen. Okay, so here we see the process involved. Okay, the process involved in concentration are, ओके, हाइड्रोलिक मेथड जो मैंने पहले आपको समझाया, जिसमें क्या रहता है, जिसमें एक स्टेयर लाइफ का कुछ स्केच वगैरह रहता है जिसमें ओड और वाटर के साथ फ्लो होता है, ठीक है। हैवी डेंसिटी वाला जो एलिमेंट रहेगा, इम्प्योरिटी और कुछ भी हो सकता है, वो इसके अंदर फंस जाएगा, उससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक सेपरेशन में मैग्नेट रहेगा कॉमन वे जो रहता है, उसमें एक बेल्ट रहता है, पता है ना आपको, ऐसा एक बेल्ट रहता है, उससे ओड जाता है, गुजरता है, इधर पे मैग्नेटिक व्हील रहता है, जो मैग्नेटिक वाला जो एलिमेंट्स रहेगा वो बेल्ट के साथ चिपक जाएगा और दूसरा एलिमेंट बाहर पे जाके कलेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फ्लोटेशन, एक बहुत बड़ा वाला टैंक रहता है, बहुत बड़ा वाला टैंक रहता है, टैंक के अंदर पानी और ऑयल रहता है, उसका कंसंट्रेशन रहता है, उसके अंदर में एक ट्यूब से उसको एयर को छोड़ा जाता है, वो एयर से क्या होता है, उधर पे झाग बनता है और एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस चालू हो जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज लीचिंग। ओके, the last one is the process of leaching। तो यही सारा ये चार वाला प्रोसेस आपके इधर पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो इसमें से हमको क्या है देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिफाइनिंग ऑफ ओर्स आर, ओके, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, ऑक्सीडाइजेशन एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ओके, रिफाइनिंग का जो प्रोसेस होता है वो एक एक चीज के लिए एक एक टाइप का होता है, वो उधर पे दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडाइजेशन करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करता है जो जो सारा एलिमेंट है नेचुरली जिसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला एलिमेंट्स है, उस लोगों को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के साथ से उसको सेपरेट किया जाता है, जिसमें एक प्योर मेटल का बार होता है और इम्प्योर मेटल का बार होता है, कैथोड एनोड रहता है, वैसा करके।
Potassium and sodium oxide cannot be reduced by carbon monoxide and hydrogen. ओके, क्लियर। इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी हम लोग बोलते हैं। ओके, ऐसा एजेंट जो क्या करता है, जो होता है वाटर का मॉलिक्यूल्स, जो मॉइस्चर होता है उस लोगों को सोखने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो नंबर 4, व्हाई डज आयरन और जिंक नॉट ऑक्वायर फ्री इन नेचर? जीन और आयरन क्यों नेचर में फ्रीली नहीं अवेलेबल मिलता? So, iron and zinc are quite reactive and hence they do not occur in the free state. The compounds of metals found in the nature are their oxides, carbonate and sulfide. Okay guys? So इसलिए नेचर में freely नहीं मिलता naturally. What do you observe when hydrogen is passed over heated copper oxide? हम अगर हाइड्रोजन को पास करते हैं कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से तो क्या होता है? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू ब्राउन और रेड। ओके, कॉपर ऑक्साइड रहा, हाइड्रोजन रहा, उसके ऊपर से हम लोग हीट अप्लाई किए, उसके बाद जो आएगा प्योर कॉपर आएगा और H2O आएगा, पानी आएगा। ओके, सो नंबर 6। ओके, सो क्या बोला? कंपैरिजन ऑफ द रोस्टिंग एंड होचे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में एक डिफरेंशिएट इधर पे कंपेयर करने के लिए बोला गया है, कंपेयर करने के लिए बोला गया है। हमको तो पता ही है कुछ बेसिक फेनोमेनन क्या होता है। ओके, इसमें एक्सेस एयर को दरकार पड़ता है, एक्चुअली रिक्वायर होता है, और द ओर हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसमें कोई एयर का जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो एयर का जो मेन पार्टिकल्स ऑक्सीजन होता है वो तो प्रेजेंस होता है। जनरली सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड सो SO2 is given off like as zinc sulfate, CO2, ओके, ZNO और 2SO2, ऐसा करके हम लोग इसको सल्फाइड कोड को ऐसे करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिससे हमें मिनरल लेने में इजी हो। और कार्बोनेट और जैसा रहता है उसमें क्या यूज किया जाता है? ओके, कैल्शियम का जो है कैल्सेंट एंड सो ऑन, CO2 एंड वाटर वेपर आर गिवन ऑफ, इससे निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या नंबर 3 जो बोला है volatile impurities are removed as oxides and they and the ore become pores and more reactive. Okay, moisture and organic impurities are removed and the ore become pores and the more reactive. ऐसा कुछ दिया हुआ है हमारे इधर पे, हम लोग देखेंगे। अभी क्या है, नेक्स्ट में हम लोग चला जाते हैं। उसमें क्या बोला है? नेम एंड ओर ऑफ जिंक। जिंक का ओर का नाम क्या है? जिंक का ओर का नाम क्या है? नाम है जिंक ब्लेंड्स। ओके, zinc blend ZNS, which process is applied to concentrate it is concentrate, the process is fourth flotation। ओके, रिमाइंड कर लो फोर्थ फ्लोटेशन कौन सा प्रोसेस है? टैंक है, ऑयल है, वाटर है। ओके, सो नेक्स्ट वन, so here we see how to concentrate ore change to oxide। ओके, concentrate ore को कैसे ऑक्साइड में, how to change? ओके, very simple, concentrate ore is changed into oxide by heating। okay, that like a zinc blend। okay, ZNS is excess of air, ZNS plus 3O2, okay, 800 applied heat 800 degree centigrade, 2 ZNO plus 2 SO2. So is the set, we get the zinc oxide. Very easy. Okay. Question number 8A. Some metallic oxide can be reduced by hydrogen, carbon and carbon monoxide and some cannot. Explain. Okay. So, oxide of highly active metals like potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium have great affinity toward oxygen and so cannot be reduced by carbon and carbon monoxide or hydrogen. Metals is middle of active series like as zinc, iron, lead and copper are moderately reactive and
are not found in oxide form. These are found in nature as sulfides or carbonate form. These are first convert into oxides and can be reduced by carbon, okay, like as coal, we should use coal and CO, carbon monoxide, H2, okay, hydrogen, zinc oxide plus carbon and get heat 400 degrees centigrade. We get the zinc and carbon monoxide, okay, like as this lead. Uh, so we use carbon monoxide, okay, lead oxide, carbon monoxide, get lead and carbon dioxide. Metal low in the activity series is very less reactive and oxides of this metal reduce to metals to heating alone, like as copper oxide, hydrogen, adding heat, copper and get H2O. How are the following metallic oxide reduced? Write equations. Dear students, it is a very important question. So here we see the iron oxide and the zinc oxide. Okay. So four iron oxide and one molecules of oxygen can get react to ferrous oxide. Okay, and ferrous oxide and 3 carbon monoxide. Temperature will be 600 to 400 degrees centigrade. Get heating and 2 Fe or iron we get and 3 carbon dioxide. 3 molecules of carbon dioxide. And zinc oxide is reducing by coke. Zinc oxide and coke added, like we said, carbon particle get heat and zinc and carbon monoxide. Question number 10. State why aluminum in extracted form is oxide by electrolysis while copper, lead, iron reducing agent and mercury and silver by thermal decomposition. Aluminium has a great affinity toward oxygen and so cannot be reduced by carbon and carbon monoxide. So it is extracted from its oxide by electrolysis. Metals like copper, lead and iron are placed in the middle of the activity series and red and re moderately reactive and their oxides can be reduced by carbon, carbon monoxide and hydrogen. Mercury and silver are less reactive and they are placed lower in the reactivity series. The oxides of these metals are reduced to melt by heating their oxides. Just only apply heat and we get the pure form of silver or mercury. Okay. An ore on being held and heated in air from sulfur and sorry from sulfurous anhydride right, the process used the concentration of this ore. The process used the concentration of this ore is fourth flotation process. Okay, fourth flotation process, right, the process used the concentration of this kind of ore, sulfurous anhydride. Okay, anhydride, sulfurous anhydride. सॉरी, गला बहुत सूख रहा है, फिर भी आज ये वीडियो तो मुझे बनाना ही है. सो अभी क्या है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 ए में जाएंगे. डिफाइन रोस्टिंग. नेम एन ore which roasting is done. Given valence equation.
बैलेंस इक्वेशन भी हमें डालना है. Roasting is the process of heating concentration ore to a high temperature in the presence of air. The ore zinc blends is roasted in order to get zinc oxide. Example, zinc sulfides and oxides to zinc oxide. Okay, like a zinc sulfide, NaCO2 added oxygen, 2 zinc sulfide, CO2, 2 zinc oxide, and 2 SO2 is reduced. ओके अभी हम जाएंगे नेक्स्ट वन में जिधर पे 12 बी है. डिफाइन calcination, give example and equation for calcination. We know in this definition. Okay, calcination is the process of the heating the concentrated ore such as carbonate or hydrate oxide to a high temperature in the absence of air. Example, metal carbonates get decomposed to produce metal oxide like as ZCNO3, ZNO plus CO2 carbon dioxide, CaCO3, calcium carbonate, calcium oxide and carbon dioxide. How are the metals like sodium, potassium, and calcium obtained? Give equation. Sodium, potassium, and calcium metals are obtained by the electrolytic reduction or fuse metallic salt. Okay. Next one, the number 14. Give equation for the reduction of copper oxide, iron oxide, lead oxide, and zinc oxide. Reaction of copper oxide, here you see copper oxide plus coke or carbon particle at heat, copper plus carbon monoxide, copper oxide plus carbon monoxide, copper plus carbon dioxide, copper oxide plus hydrogen at heat, copper plus hydrogen of H2O, that's mean our water. Reducing iron agent, same is ferrous oxide plus one time we use coke and carbon monoxide and hydrogen and we get carbon dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide and H2O. So here we see PbO and also lead. Okay, carbon monoxide, carbon dioxide, H2O, PbBbb, lead, and also reducing zinc oxide, ZNO plus C, but the temperature is 1400 centigrade. Okay, number 15. On which factors does purification of metals depends? Okay, the purification on depends upon the nature of metal, nature of impurities present in the metal, purpose of which metal to be used. Okay, and B, name of the method used to the purification, distillation, liquefaction, and oxidization, electro refining. Okay, that is the method of purification. Which level diagrams explain refining of a particle metals. Okay, this kind of method, this is the 1A anode and 1A cathode, impure copper, okay, and pure copper, okay, and this is the solution, anode matte, get the mat and the battery. Okay, this is the very simple diagram on your textbook. Number 16, choose the correct option. The metal other the aluminium which has the strong affinity of oxygen is copper, magnesium, silver, gold. Okay, so this is the four options you have get. The option B is correct. The metal other than aluminium which has the strong affinity of the oxygen the is magnesium. Okay, and the metal oxide which cannot reduce the normally reduction agents, the option is number A, zinc oxide. Okay, the metal of oxide which cannot be reducing normally agent is the zinc oxide. Fill in the blanks. Okay, here we see the blank. Usually I am go to the directly in solution. Okay, usually carbonate ores are subjected to the calcination, which is just the absence of the air. Zinc blend is converted to the oxide by the roasting process. Fourth flotation process is the generally to the concentrate sulfide ores. Okay, so here we finished, just completed our exercise 7b part, and in the next video we will be discuss the exercise 7c part. I hope you are guys enjoy this video. If you had any queries, any question, please comment in the down below, and I get leave my mail ID. Okay, so you can guys email me or text me if you had any help and support. Thank you so much. Keep watching.
Stay healthy and be safe.